Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'île Maurice, plus précisément au complexe sportif de Cote où se déroulent actuellement les premières compétitions du Kabaddi, une discipline quasiment méconnue à Maurice, mais qui fait un tabac actuellement en Inde et dans les pays asiatiques. Donc le Kabaddi, c'est une compétition où, si vous êtes à l'écran, donc à l'arrière de moi, vous allez voir qu'il suffit simplement de rentrer dans la surface adverse pour essayer de toucher l'adversaire, ensuite retourner dans son corps sans être attrapé, sans être immobilisé par l'adversaire. Alors donc cette compétition qui est organisée aujourd'hui pour le Triolet Kabaddi Club avec bien sûr beaucoup de sponsors, mais nous en reviendrons. Pour l'instant, je vous laisse avec Ashutosh pour les commentaires en anglais et en hindi. Alors avant de passer les commentaires en anglais et en hindi, je voudrais également un petit mot en créole mauricien. Alors bonnes camarades, bienvenue à l'île Maurice, bienvenue à Côte d'Or pour sa compétition Kabaddi, une compétition qui est organisée pour la première fois à Maurice Indo. Il déjà fait l'eau la plage, mais là c'est la première fois dans une enceinte comme ça, avec une ambiance extraordinaire ce matin. Et là pour l'instant, je suis avec Ashutosh pour les commentaires en hindi. Welcome everyone, welcome to Mauritius. This is the first live broadcast of Kabaddi tournament from Mauritius. This is an amazing time. A lot of youngsters around here and they're playing Kabaddi, which is a new game to them. This is an inter-school national Kabaddi championship, and this championship is in junior and sub-junior class, and this is the place, the venue of one of the fantastic sports complexes of the world, Cote National Sports Complex, Mauritius. The teams which are playing here, they are into 4 categories. The secondary girls, we have 6 teams. Venom, Hurricane, Pink Panthers, Memento Maurice, Avengers, and Firecrackers. This is the first time when this inter-school competition is going live. A lot of enthusiasm between the schools and between the students with a lot of music, the typical Mauritian music and everything. In the secondary boys, again they have 6 teams: Naruto, Eagles, Black Catalyst, Fearless Warriors, Teen Titans and Wolves. The position here is we'll be having a semi-final, the final matches live, and this is an amazing time in Mauritius. Mauritius has got a Kabaddi Federation which is young in its inception, started as a club. Mauritius has developed a lot of club Kabaddi, although the clubs are limited, but it is vastly popular in schools and getting from places to places. This tournament is playing with the international format, but the players as well as the officials as well as the organizers, for them this is definitely a time when the first time they are doing all these things. Now we are ready for the first match, which will start after some time, and before the match goes on, I will like to hand over this microphone back to my colleague Harley, who will take on from here. Alors donc dans quelques instants, nous allons avoir les équipes pour les premières demi-finales de cette compétition indoor de Kabaddi, organisée donc à Maurice, organisée au complexe sportif de Côte d'Or. Je vous rappelle que la compétition a débuté ce matin à partir de 9h30 avec une dizaine d'équipes chez les garçons et chez les filles combinées pour cette première compétition indoor, avec entre autres les équipes comme le Naruto, les Eagles, le Black Catalyst, Teen Titans, Fearless Warriors et Wolves chez les garçons. Chez les filles, les équipes de Venom, Hurricane, Pink Panthers, Memento Mori, Avengers et le Firecrackers. Nous sommes arrivés maintenant aux demi-finales chez les garçons pour les juniors, également chez les filles pour la catégorie junior et chez les primaires, donc les petits entre 8 et 12 ans également sont de la partie aujourd'hui. Et cette compétition donc, qui se déroulera jusqu'à environ de 15h pour la remise des prix aux vainqueurs. Les règles de cette compétition, donc tout simplement 7 joueurs de chaque équipe. Au total 12 joueurs, 5 sur le banc, 7 en compétition.
Il faudra rester tout simplement dans son carré de compétition et attendre l'autre adversaire, un adversaire qui va venir essayer de toucher et l'adversaire lui essaiera de ressortir pour rentrer chez lui c'est de l'autre côté évidemment, sans être immobilisé par son adversaire de joujou et un point est marqué. La compétition donc qui dure 20 minutes par match et avec une mi-temps de 2 minutes. और हमारे उन हिंदी दर्शकों के लिए जो पहली बार मॉरिशस से लाइव कबड्डी देख रहे हैं उनका स्वागत और उनके लिए जानकारी कि यह मॉरिशस की पहली कबड्डी चैंपियनशिप है जो कि अंतर विद्यालयीन है, इंटर स्कूल है, नेशनल चैंपियनशिप है और इस चैंपियनशिप में जूनियर बॉयज़ और जूनियर गर्ल्स की 6 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों का चयन स्कूलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण हुआ है। मॉरिशस में कबड्डी नया गेम है, इट्स अ न्यू गेम इन मॉरिशस, बट द कबड्डी फेडरेशन ऑफ मॉरिशस ट्राइंग हार्ड टू मेक इट पॉपुलर and to make it popular as football, although it is very difficult. Football is #1 game in Mauritius as far as following is concerned. जहाँ तक मॉरिशस की बात है, मॉरिशस में शुरुआत हुई पहले छोटे छोटे स्कूलों से शुरुआत की गई फेडरेशन द्वारा। 2015 में शुरुआत हुई थी मॉरिशस में कबड्डी चैंपियनशिप की, लेकिन आज ये पहला मौका है जबकि कबड्डी चैंपियनशिप जो कि अंतर विद्यालयीन है, इंटर स्कूल है और जिसको त्रियोले कबड्डी क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर द एजेस ऑफ मॉरिशस कबड्डी फेडरेशन, पहली बार लाइव हो रहा है। और यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कंपटीशन हो रही है। सो द हिस्ट्री ऑफ कबड्डी इन मॉरिशस इज नॉट न्यू, इट स्टार्टेड इन 2015 and it started from some villages. Mauritius is spread into a small villages, although you can cover from one point of Mauritius to the second point within 1.5 hours, but there are lot of villaging networks. So Kabaddi was started in 2015 from villages, and from villages it went to the district council level tournaments. District councils are basically the councils which cover some 6-7 villages. And from the district council level championship, it moves to schools, and from schools, now there is a lot of enthusiasm in schools, and the schools are doing good. So now the thing is, today from 2018, the Mauritian, after the establishment of Mauritian Kabaddi Federation, the game in Mauritius is picking up, and hopefully it will be like one of the main games of Mauritius soon. In Mauritius, in 2017, the Federation organized the Beach Kabaddi, which is like the World Championship where in India, Oman, Sri Lanka, England, Kenya, and obviously Mauritius participated. So this is what the scene in Mauritius, and now we will be ready for the match. First match will be between the girls. Alors donc la première semi-finale chez les filles mettra en opposition le Momento Mori au club Hurricane avec, je vous donne donc les participantes pour le Momento Mori avec Tulsiram Panavi, Nabila Mitou, Mouchaïba Bikari, Amy Perrine pour le Momento Mori, et l'autre équipe avec le Hurricane, Chelsea Lamport, Kimberly Trapu, Shannon Baptiste, Alicia Edouard, Ophélie Proper et Marianne, et également Anaël Bien-Aimé. Voilà donc pour le classement des équipes pour cette première semi-finale chez les filles. Alors, mes camarades, je vous rappelle donc qui nous est en demi-finale cette fois-ci, chez les filles évidemment, l'équipe de Momento Mori et Hurricane. Et deuxième demi-finale, nous vous donnons dans quelques instants. Participants, donc le classement pour demi-finale, deuxième demi-finale. Également chez les garçons, nous arrivons au stage de demi-finale. Les 4 équipes qualifiées pour sa demi-finale là, pour nous vous gagner dans quelques instants. Donc les 4 équipes chez les garçons seront reconnues dans quelques instants. Alors, donc une compétition à Maurice pour lancer donc cette discipline, et espérons que dans les années à venir,
ce sera une compétition très connue et une compétition qui deviendra tout comme le foot ou le volley à Maurice, parce que à voir l'ambiance d'ici, on est à croire que cela viendra très 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 vite. Alors, chutage donc qui continuera maintenant en hindi et en anglais. So the preparation for first match is on. It will be girls match between Memento Maurice versus Hurricane. Memento Maurice और हरिकेन के बीच पहला मैच खेला जाएगा. लड़कियों के मुकाबला है ये, और इसमें मोमेंटो मॉरिस की जो टीम है वो है तुलसीराम पनावी, नाबिल, मुशाइबा, इमी, पैरिन, वलेरी, मेगान जोसेफ और क्लेरनिया. यह है टीम मोमेंटो मॉरिस की. हरिकेन की टीम में है चेल्सी, किम्बरले, शेनन, एलिशिया, ओफिली, मैरियन और एनाइल. तो यह है टीमों का स्ट्रक्चर. कुछ ही देर में मैच की शुरुआत होगी, और यह मैच जो है यहाँ पर कुल 15 मिनट का खेला जाएगा. 15 मिनट का इसका ये और अब मैच की शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है. काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूली छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बहुत ही उत्साहजनक बात है, खासकर यहाँ पर रहने वाले मॉरिशस के लिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लाइव फ्रॉम कबड्डी which you are seeing right now from Mauritius Cote Sports Complex. This is an international sports complex and one of the finest in the world, and we are at their indoor stadium. So the match will start soon, and these matches, which are basically playing on the rubber stuff, the very good flooring, and a beautiful setup, and a good set of officials who have not traveled overseas, but whatever they learned it here. So Kabaddi Championship is on, sponsored by Bank of Baroda, Indian Oil, and so many other companies. Now, the LIC, Bank of Baroda, Suhana, and they are the main sponsors. And right now there is a preparation is on for the first match for the girls category, and that is between the Memento Maurice versus Hurricane. इस बीच यहाँ पर मिनी जूनियर्स का एक मैच चल रहा है दूसरे कोर्ट पर. छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और कोशिश कर रही हैं कबड्डी खेलने की. उनके साथ साथ ही उन्हें उनके कोच बताते भी जा रही है, क्योंकि कबड्डी यहाँ पर अभी एकदम प्राथमिक स्तर पर है. इट्स अ वेरी you can say it's on a starting point if you compare it with the India or Sri Lanka or Pakistan or Thailand. So in that way, it's just a beginning, but the beginning is very positive, very strong. So interestingly, we are doing this broadcast from the Cote Sports Complex for the live Kabaddi Championship, National Inter-School Championship of Mauritius. And the most interesting aspect, we will be doing this broadcast in 4 languages: English, Hindi, French, and the local language Creole, which is like the #1 language in Mauritius. Creole is an interesting language which is a mix of French, and you can see the little bit Bhojpuri words also here and there. So this is a time when I have a time when I can chat with my co-commentator Harley about the sports culture of the Mauritius. The most important thing is Mr. Harley, just with my co-commentator, is a senior commentator who is covering sports events since last 2 decades, and he himself was a sportsman at his time. So let's understand from him what is the sports scene in Mauritius. Yes, the main sport activities what Mauritian likes, of course, football, soccer as we say, volleyball, basketball also,
But one of the most loved one is athletics. You see, I'm a commentator for athletics mainly, but we are divided among the population. So we love football, we love athletics, we love sport as a whole. And another sports that we like is horse racing. Horse racing. Not only for the betting side, but also for the beauty of the sport. You see animals running, the horse running, the colors, the people about, let's say, in a single horse race day, you may have up to 50 to 60,000 people attending. And the Maiden Cup is the main race day that unite all Mauritians from all over the country. They just go to Paul to see this race. The race that started in 1812 or 13, I think, something like this. One of the oldest race course in Mauritius. So Mauritius is a sport activity country, you see. The football, I have seen a lot of football following, especially the English football. Yeah. Mauritius followed like anything. Yes, so Mauritius like English football, the English Premier League, but they also follow the German league, but the EPL, English Premier League, is the most followed in Mauritius. Long ago, we do have our national competition in football, but since about 20 years now, the level has dropped, so the stadium are barely empty. But long ago, when I was a kid, we used to have up to 20 to 30,000 people in the stadium. For us, 20 to 30,000 is a big number of people because our stadium is very small. The capacity may be up to 20,000, and you may have on a special match like long ago there were 3 or 4 great teams like Fire Brigade, the Sunrise team, Cadets Club, Scouts Club. You may have, when these teams meet, you may have 20,000 in the stadium and another 20 outside the stadium waiting to get into the stadium. You see? But unfortunately now the level has dropped and we are no longer one of the major forces in Mauritius. Our last participation in the African Cup was in 1974 in what is known now as Congo, and long ago it was in Zaire. You see? But whenever a international competition like the Indian Ocean Games, we are all united behind our motherland, our flag. So, like yours last year, no, it's not last year. That's what, in fact, the place where we are sitting is the Cote Sports Complex, which is one of the finest I have seen in the world. And this was, in fact, specially constructed for Indian Ocean Games. Indian Ocean Games. So, how was that Indian Ocean Game, and how was your performance in that? Okay. Oh, yes, Mauritius won the competition as a whole. Okay. Yeah. And but we lose in the final for football. We won the medal in athletics. Overall, athletics, we won the medal. And we won about 220 medals, 160 medals, I think, on a whole. And we won the competition as a whole. And the next day, it was a public holiday. Okay. Yeah, you see? Oh, great. So that's what the Mauritius in the sports field? Yes. And we will now go to the... They are still preparing, I think. Yes, to the semi-finals between the Fearless and the Naruto for the boys. For the boys, that will be then the boys. Yes. The Fearless versus? Okay. The Fearless versus Naruto. Yes. The Naruto is in black jerseys. They're calling for, there is a call for Naruto. And the match is about to go. Now, for the secondary boys, this will be the secondary boys match between Naruto and Fearless Warriors. The Naruto team is Andrew Munier, Jason, Teddy, Ashraf, Yogen, Motalam, Ashfaq, and for the Fearless Warriors, it is Axel, Farhan, Gerald, Jordan, Buradan, Van, and Uwais.
This is what the team structure is. Both the side they are having 7 players, no reserves. So this is what the match is. Alors donc, nous avons une demi-finale chez les garçons entre Fearless et Naruto. La composition de Naruto avec Andrew Meunier, Félicité Jason, Cote TD, Ashraf Saab, Yogen Chelembarum, Montalon et Ashfaq Emoli. C'est pour l'équipe de Naruto. Et l'équipe de Fearless. Et Fearless Warriors avec Axel Vieilleuse, Farwan Kodabakos plutôt, Gérald Vieilleuse, Jordan Moutalan King, Saif Mouradon, Wayne Afok et Uways John Bacchus. Voilà donc pour les deux équipes. Naruto qui se trouve en vert et noir. Et bleu. Alors la compétition, cette demi-finale donc qui va commencer dans quelques instants. Voilà une discipline méconnue, comme je vous disais au début de notre intervention, une discipline méconnue à Maurice, mais qui, je pense, prendra de l'ampleur puisque très intéressant à voir, très intéressant à jouer également. Et si vous êtes partant pour vous lancer dans cette compétition, dans cette discipline, n'hésitez surtout pas à contacter le Triolet Kabaddi Club, le Triolet Kabaddi Club donc, pour vous faire inscrire et ensuite participer notamment éventuellement. Participer aux rencontres qui se discuteront dans les mois à venir.
Les joueurs sont en concertation pour le toast avant le début de la rencontre avec pour cette première semi-finale chez les garçons avec Naruto qui se trouve à porter l'orange et le Fearless Warriors qui est en vert. Fearless is in green and Naruto is in orange t-shirts. The match is about to start. This will be the first match of the day and the final briefing by the umpires. The scorers are also ready, the officials are ready, and within few moments we'll start our first match between Fearless and the Mauritius. Yeah, this is the Fearless Warriors between Naruto. So this is the first match. Naruto is in orange, Fearless Warriors are in green. And this is the secondary boys match, semi-final, and the match is about to start. The captains have shake their hands, due for toss, and it's a toss. Fearless has won the toss and they are deciding to attack. Fearless, this is the first attack from Fearless side, the first raider, and he was stopped on the line. They're waiting for the umpire, second umpire to take his position. He's talking with the scorer and now he's coming back to Alors donc le match qui débutera dans quelques instants. Between by both the umpires to both the captains, and the match is about to start now. Alors les dernières instructions des arbitres pour ce match. Ensuite, ce sera le début donc de cette première demi-finale. L'équipe de Naruto en orange à gauche qui attaquera donc vers la droite. Et l'inverse pour l'équipe de Fearless Warriors en vert qui attaquera du côté qui est. C'est déjà voisin, c'est lancé. 20 minutes de rencontre avec l'équipe de Fearless en attaque pour les premières secondes de ce match. Et le premier point qui est marqué par l'équipe de Naruto. Naruto lost their first point. À l'attaque maintenant l'équipe de Fearless Warriors. So here now it's a Naruto on attack from the right flank, moving inside, touch line, cross touch line even, and he's coming back. You have to see whether he has touched one. Alors un point partout donc. Point he received. With this 1 point, now Naruto is on 1 and Fearless on 0. Fearless is on attack and he was again caught by defenders very swiftly. Hefty, lanky boy, but very easily caught. No score. 2-2. Naruto and Fearless on 1. Now here with this attack, completely foiled. Very good tackle. And Naruto lost this point. Fearless won this point. Now they are 2-2. Match with an interesting start. Now the attack is from Fearless. Getting into cross touch line. Wanted to move a very good footwork and trying to use his reach and trying to catch, but he could touch one guy and the one guy is out. So it's 1 point to Fearless, and now Naruto on the attack. Naruto already having 3 points and beautifully scored by this, and they received 2 points
So Naruto was on 4 and Fearless is 2. Attack is with the Fearless. It's touching baseline, cross touch line, but couldn't touch the bonus line, and before that he was captured and lost his breath and lost point. Fearless lost one more point to Naruto. Alors un match lancé puisque après quelques minutes de rencontre, donc c'est Naruto qui mène 4-3 et le score était de 1 partout, 2 partout et puis 4-2. Là on est versé à 4-3 puisque comme vous voyez très bien les jeunes qui se sont lancés ont une connaissance des règlements de ce jeu puisqu'ils combinent très bien leur mouvement et leur attaque avec 5-4 maintenant pour Naruto. L'attaque de Fearless Warriors qui va essayer d'égaliser, voilà. À 5 à partout maintenant. तो बहुत ही दिलचस्प मैच की शुरुआत यह है मॉरिशस के अंतर विद्यालय स्कूली छात्रों का फाइनल नेशनल फाइनल ही है और इस समय फियरलेस और नारुतो ये दो टीमें खेल रही है। समय नारुतो आगे हैं, दोनों बराबर है समय 5-5 पर और ये अटैक था नारुतो का जो कि सक्सेसफुल हुआ और इसके साथ ही उन्हें और पॉइंट मिला एक। इस एक पॉइंट के साथ अभी नारुतो पहुंचा है 6 पर। दिलचस्प मैच, हालांकि आप इन्हें बच्चों को तकनीक में कम पाएंगे लेकिन उत्साह और गति में बेहतरीन। इस बीच एक बहुत ही सुंदर पॉइंट लिया फियरलेस के रेडर ने और इसके साथ ही फेयरलेस पहुंच गया है 6 पर जबकि नारुतो है 7 पर। Alors le score qui est passé de 7-5 en faveur de Naruto, je vous rappelle que ce match dure 20 minutes, mais en cas d'égalité après 20 minutes, quelques minutes additionnelles seront ajoutées aux 20 minutes et celui qui marquera le premier point sera déclaré vainqueur. Nous sommes à peu près comme le sudden death, à peu près comme en foot le but en or. C'est presque le même règlement et le score passe de 8-7 en faveur de Fearless. Alors mon camarade, comment vous trouvez ce match? C'est un match très intéressant à suivre avec un score très serré après quelques minutes. 8-7 pour Fearless, actuellement Fearless Warriors. Naruto 7 et nous rappelons les autres que c'est un match qui dure 20 minutes. Et après 20 minutes, ce score-là lié à égalité, c'est-à-dire que tous les deux ont le même nombre de points. Ban arbitre pour accorder encore quelques minutes et l'équipe qui marque le premier point pour déclarer vainqueur, à peu près comme le but en eau de football il y a quelques années. So score is Fearless on 10, Naruto on 7. A very good match played between these two. And now attack is with Fearless and it was a successful raid. And he got one more point. And with this score, Fearless is now moving on 11. Fearless 11, Naruto 8. Attack is with Naruto. Naruto has to score. Let's see whether this raider can bring in some more points or not. And beautifully touched. He crossed the bonus line. He touched the bonus line. He's claiming that he has touched one and it is given. He got 1 point. So Naruto has got more points. Now Naruto is on. It's a time now. A little break and the match will be start soon. तो इस समय मैच में 11 और 9 का स्कोर है। फियरलेस है 11 पर, नारुतो है 9 पर। जो हरे टी शर्ट में आप देख रहे हैं यह है फियरलेस और जबकि ऑरेंज इसमें जो टी शर्ट में आप जिन बच्चों को देख रहे हैं वो है नारुतो की टीम। इस समय अटैक के लिए तैयार है फियरलेस, जबकि वहाँ पर लाइनिंग के लिए कुछ फिर से एक बार अंपायर अंदर गए और ये अब सिग्नल हो रहा है और ये चैंट शुरू कबड्डी कबड्डी इस बार फियरलेस की तरफ से और बहुत आसानी के साथ उन्होंने एक खिलाड़ी को अपनी तरफ खींचा और एक पॉइंट बढ़ा लिया 12। अब केवल 2 लोग बचे हैं नारुतो के पास, जबकि इधर पूरे 6 लोग इस समय साथ में हैं। आक्रमण पर है इस समय नारुतो की तरफ से और वहाँ पर उन्होंने कोशिश की, टच लाइन को क्रॉस किया, बोनस लाइन को भी छुआ, दूसरी बार बोनस लाइन को छुआ लेकिन वो किसी को भी छू नहीं पाए। लेकिन इस समय फियरलेस को मिला है 1 पॉइंट, 12 पर है फियरलेस,
और 9 पर है नारुतो। Alors 12 points donc pour Fearless et 9 points pour Naruto. 3 points d'écart à ce niveau du match. Il reste environ, à mon avis, 10 ou 12 minutes à jouer. Et là, c'est un super tackle. Non, non, ce n'est pas un super tackle, me dit l'expert. Yes, this was a super tackle. Alors, va-t-il s'en sortir avec les 4 autres adversaires qui vont le bloquer? Il s'en sort finalement. Deux points d'écart, 12-10, donc un match très serré auquel nous assistons cet après-midi donc au complexe sportif de Côte d'Or à l'île Maurice. Voilà, on l'empêche avec Fearless donc qui passe à 14 et 12, Naruto plutôt qui passe à 14 et 12 pour Fearless. 15 points même maintenant. The points is Naruto is on 15, Fearless is on 12, and the attack is with the Fearless. Fearlessly trying to get into, but keeping a long distance. They're not allowing him to even touch touch line. He did touch line and touch a defender also. With a 1 point, he went back, and the score this moment is 12 for Fearless, and the score for Naruto is 18. Alors Naruto donc qui a obtenu un bonus de points, all out comme on dit dans le jargon, avec 2 points marqués et un point additionnel, donc qui passe à 18-13. Naruto donc qui commence à creuser l'écart dans ce match. On verra bien après à la mi-temps quel sera le score. Mais pour l'instant, Naruto a un pied en finale. La deuxième demi-finale donc qui se disputera juste après cette rencontre. इस समय मॉरिशस के कुडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉरिशस की इंटर स्कूल नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मैच है। नारुतो और फियरलेस इन दो टीमों के बीच में दिलचस्प मैच। नारुतो इस समय 20 अंकों के साथ आगे है, जबकि फियरलेस के पास है 13 अंक। इस समय अटैक पर है नारुतो और बहुत ही सक्सेसफुल अटैक। इसके साथ ही वो यहाँ पर 3 खिलाड़ियों को बात करके वापस पहुँचे हैं और अब देखना है कि स्कोर इस समय हो गया है 20। Alors je vous rappelle que nous assisterons directement à la finale juste après cette rencontre, puisque Black Catalyst a été déjà requalifié pour la finale et qualifié donc pour la finale. Et Black Catalyst rencontrera l'équipe vainqueur du match actuel en Fearless et Naruto. Naruto qui mène largement maintenant à 23-13, 10 points d'écart. Donc pour 23-14 maintenant, 9 points d'écart pour Naruto contre Fearless à quelques minutes de la mi-temps. Le score maintenant qui passera à 24 je pense. बेहतरीन टैकल और इसके साथ ही एक और अंक मिला फियरलेस को। 15 पे नारुतो का स्कोर इस समय 24 और इन दोनों का जो भी विजेता होगा वो फाइनल मुकाबला खेलेगा ब्लैक कैटलिस्ट के साथ। इस बीच एक और सक्सेसफुल रेड और इस रेड के साथ नारुतो के अंक हो गए 25, जबकि फियरलेस का स्कोर है इस समय। Alors le joueur donc qui va attaquer, voilà comme vous voyez actuellement à l'écran, l'équipe de Fearless doit rentrer dans le camp adverse et pas plus de 30 secondes pour en ressortir tout en touchant un adversaire. Voilà donc avec cette fois-ci l'attaque de l'équipe de Naruto qui mène 28-16, 12 points d'écart. Ce qui va passer maintenant à 28 à 29 maintenant à 16. Puisque donc il a pu toucher la ligne médiane avant d'être immobilisé.
Un point additionnel pour Naruto qui passe à 29-16. Avec une attaque maintenant de l'équipe de Fearless. Est-ce qu'il va s'en sortir? Le secrétaire de Fearless, il va essayer. Il va essayer de s'en sortir. And the defensive Naruto lost 1 point because one of their players crossed to the cross lines and went into lobby. So they lost that point. The current score is 33 for Naruto and 16 for Fearless. There is some injury on the ground and there is a call for first aid. The first aid is there, providing him first aid. By the time we have a time to look to the score right now is Naruto on 33 and Fearless is on 16. This is an interesting match. When the match began, Fearless took a very early lead and 2 points are given to Fearless, and now Fearless is on 18 and Naruto on 33. This is the score this time. This is the first match, and the winner of this match will play the Black Catalyst into final. ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मैच का जो भी विजेता होगा वो फाइनल मुकाबला खेलेगा ब्लैक कैटलिस्ट के साथ. इस समय स्कोर है फियरलेस के पास 18 अंक जबकि नारुतो के पास 33 अंक. और अब फिर एक बार शुरुआत, जबकि इस समय फियरलेस में केवल 2 खिलाड़ी बचे हैं डिफेंड करने के लिए, जबकि नारुतो के पास इस समय मैदान में 6 खिलाड़ी उपस्थित है. सो दिस इज द पोजीशन. At this point of time, Fearless is having 18 points, while Naruto is leading with the 35 points. Naruto has got only 2 players in ground, and all remaining are on the benches. Alors Naruto donc qui va attaquer de la gauche vers la droite, qui mène largement maintenant après un début de match où les deux équipes se tenaient de très près pendant les 5-10 premières minutes, mais là, Naruto a pris les devants et mène largement devant Fearless et se dirige vers la finale pour affronter Black Catalyst tout à l'heure. « 17 points d'écart maintenant à quelques minutes de la mi-temps qui durera 2 minutes. » So the team is back after the all-out. When everybody was out, and now it's a new attack by the Fearless. They have 18 with score, a good rate, good momentum, and he touched one. He got 1 point. The Fearless with this 1 point will reach on 20, and now attack is with the Naruto. Naruto already having 39 points on the board, and here goes. The first, he touched the touch line and even the baseline also. But he was caught there, but the 1 point has to be given as the more than 6 players were there and he touched the bonus line. Next bit, Fearless attacks, and with the 1 point he returns back. Now it's a time for Naruto. It's a raid from red side, moving towards left, using his feet, touch bonus line, and a beautifully played, a very gymnastic-like move. Jump out, make his place, make space for himself, and move. And a beautiful point won by Naruto on 41, Fearless on 23. Alors Naruto qui mène maintenant 40 points à 23. Et c'est l'attaque de l'équipe de Fearless, abordée donc par Naruto. Naruto donc qui se dirige vers la finale. Et l'attaque de Naruto maintenant, il va s'en sortir. Non, il ne s'en sortira pas. 1 point additionnel pour Fearless. Demi-finale. Naruto 43, Fearless 27. So the score is Fearless is on 27, Naruto on 43.
So it's a half time, and now they'll be ready to change their ground. This is the Kabaddi Championship sponsored by this National Kabaddi in Mauritius is organized by Triole Kabaddi Club under the aegis of Mauritius Kabaddi Federation, and the institutions which are supporting this noble cause is National Social Inclusion Foundation, Life Insurance Corporation of India, Bank of Baroda, Ajanta Pharma Mauritius, Indian Oil Mauritius, Suhana Spices, Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology, Ministry of Youth Empowerment, Sports and Recreation, and Mauritius Sports Council. So with the help of all these organizations, this tournament is on in Mauritius Cote National Sports Complex. So now it is the second half. It's the second half, and now the score currently is Fearless is on 27 and Naruto on 43. Donc la deuxième mi-temps qui va commencer dans quelques instants avec large avantage pour l'équipe de Naruto qui mène 45 à 27, 18 points d'écart et encore 10 minutes de compétition. Alors est-ce que Fearless pourra remonter le score ou ce sera l'avantage pour Naruto d'accéder en finale contre l'équipe de Black Catalyst? Réponse donc dans 10 minutes ou peut-être un peu plus, mais net avantage maintenant pour l'équipe de Naruto. Je rappelle également que nous avons une compétition chez les filles, également chez les garçons pour les primaires et chez les filles juniors. We are at the Cote Sports Complex in Mauritius, and fortunately we have with us the President of Mauritian Kabaddi Federation, Mr. Harish Kumar Singh. Harish ji, welcome and congratulations for organizing such a big event and good event. Thank you very much. I just want to point out here that Mr. Ravin Lagan is the president of Mauritius Kabaddi Federation, and currently I am holding the presidency of Africa Kabaddi Confederation. Oh, I'm sorry. No, yeah. So let me know what are your plans for the kabaddi in Mauritius and how you could reach up to this level. Actually, school students, as we can see here, are very, very energetic, and they have too much interest in this sport. I'm very sure that in future they will grow more, the number of the players will grow more, and we are planning to have some leagues also, as well as some international event where they could show their talent
and I'm sure that one day we could see something better for Mauritius Kabaddi. और इसी बीच मैच शुरू है और इस समय फियरलेस की तरफ आक्रमण जारी है। 27 पॉइंट है 45 पर नारुतो और बेहतरीन रेट थी है जिसमें वो वापस लौट के आए और 2 पॉइंट मिले हैं। देखना है कि स्कोर अब क्या होता है। हरीश जी ये बताइए कि मॉरिशस जैसी जगह में कबड्डी को लाना कितना मुश्किल था? एक्चुअली मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है, जिस वजह से थोड़ा सा स्पोर्टिज़म को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब बच्चों का एनर्जी देखा गया तो मुझे लगा कि धीरे धीरे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो 4-5 साल लग गए सर यहाँ तक आने में। कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इंडिया होता तो शायद हम 1 महीने के अंदर ये सब कुछ कर गए होते। नहीं हरीश जी, इस समय स्कोर है 51 नारुतो का और फियरलेस है 27 पर, और इस समय आक्रमण पर है फियरलेस और यह असफल आक्रमण, इसके साथ ही 1 अंक और मिला नारुतो को। हरीश जी मॉरिशस में वैसे भी स्पोर्ट्स का उस तरीके का कल्चर नहीं है, या एक तो मेरे ख्याल से उसका कारण ये भी है कि जनसंख्या बहुत कम है और बहुत सारे खेल हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैं कबड्डी को यहाँ पर आज देख रहा हूँ, मैं बधाई देना चाहूँगा आपके फेडरेशन को और आशा है कि हम इसे और भी नए मुकाम पर ले जा सकेंगे। जी धन्यवाद। मुझे भी उम्मीद है कि बच्चे और मेहनत करेंगे, हमें और बच्चे मिलेंगे और मिल रहे हैं। कुछ स्कूलों के आज भी इस इवेंट के दौरान ही कुछ स्कूलों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो भी कबड्डी अपने स्कूलों में कराना चाहते हैं। तो लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, और साथ में हम बहुत जल्द स्कूल हॉलीडेज़ के टाइम पर अराउंड 30 स्कूल्स में जाएंगे कबड्डी कराने, जहाँ पे 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे मिलने वाले हैं। जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लग रही है हरीश जी, वो जो दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं, खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं, और जी अगर शोर शराबा देखा जाए तो बिल्कुल भी प्रो कबड्डी से कम नहीं है यहाँ। उम्मीद है कि आगे चलकर शोर शराबा और हो और खेल भी इनका सुधरे। बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं। केबीडी जूनियर्स भी होता है इंडिया में बच्चों के लिए, देखा जाए तो उसी लेवल का ये इवेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं उम्मीद है और आगे अच्छा करेंगे ये। सो इस समय स्कोर है फियरलेस 35 पर, नारुतो है 52 पर, लीड उनकी तरफ है, और अगर वो ये मुकाबला जीतते हैं तो फाइनल मैच खेलेंगे वो ब्लैक कैटलिस्ट के साथ। Alors plus que 5 minutes donc avant la fin de cette rencontre avec धन्यवाद हरीश जी। toujours l'avantage pour Naruto qui mène 38-52, 14 points d'écart donc maintenant. Et on voit mal cette équipe de Fearless revenir sur Naruto maintenant. Mais évidemment, en sport, tout est permis. Tout peut arriver en sport. 14 points, c'est beaucoup, mais et c'est peu également. L'attaque, si on attaque sans relâche du côté de Fearless, il se peut que l'écart soit réduit et même peut-être avantageux à Fearless. Voilà, c'est reparti dans quelques instants. Avec les 7 joueurs de chaque équipe campés sur sa ligne. L'attaque de Naruto pour l'instant. 52-38 pour Naruto. C'est bloqué, un point additionnel pour Fearless. Donc qui passe à 39 points Fearless, 40 points même, on me fait ici, voilà c'est 40 points à 52. Naruto à l'attaque. Allez, va-t-il s'en sortir? Seul contre tous, on peut le dire ainsi. 6 contre 1, va-t-il... Non, il s'en sortira pas finalement. Allez, Fearless qui grappille des points petit à petit. Mais est-ce que suffisant pour revenir au score? Maintenant, mon chronomètre à 2 minutes
de la fin du temps de cette rencontre. Naruto donc qui se dirige vers la finale contre Black Catalyst. So it's a time for Fearless to attack. Let's see how fearlessly they can attack. Their right time, they're lagging behind 12 points. Naruto is leading with 52, Fearless is on 40. And let's see whether they can reduce the score and try for the final position in the final match. The winner of this team will play the final with the Black Catalyst, and that will be the trophy final. It was Naruto is now playing well. Naruto from Naruto, Anirudh, Jason, Teddy, Ashraf, Yogen, Motalang, and Ashfaq. They are really playing good, a very good game, and that game is definitely taking them step by step towards the final. And now, here the Fearless attack, but it was tried to be tackled by a single person very easily. It was for a Fearless guy to come back. And the Fearless is on 44, Naruto is on 52. Donc les Cotes se réduisent, va pouvoir assister à une fin de match extraordinaire pour Fearless. 8 points d'écart, je ne vois pas moment. C'était 27 à 45 en faveur de Naruto. Et là, en l'espace de quelques instants, les 18 points sont passés à 8 points d'écart seulement. Mais le temps fait défaut, le temps fera défaut. 53 maintenant, 45 pour Naruto. 8 points à quelques secondes de la fin. Alors donc 53-45, 8 points d'écart seulement pour Naruto. Je vous rappelle qu'auparavant il y avait 18 points d'écart. Mais le temps fera certainement défaut pour Fearless pour revenir au score. Il ne reste pas grand temps donc pour Fearless pour refaire son retard. Maintenant 46 ou 47 points. Le temps de voir les juges. 47 points. À 53, 6 points d'écart pour Naruto qui se fait remonter petit à petit. 50 points, 3 points d'écart. Est-ce que l'impossible se produira ici? Est-ce que l'impossible va se produire? Fearless donc qui revient maintenant. And it was a very interesting raid, but I think it was catch, and there is a decision. Only 1 point is given to them. And now the score is 54 in favor of Naruto. While Fearless, which has done an interesting raid, last raid, and they are on 50. So the match is moving into very interesting turn. And let's see who will be the winner. The winner will play against the Black Catalyst. And so here are the final moments of the match. And very interesting turn. Fearless is on 50, Naruto was on 54. A lot of seesaw we saw. Fearless open account with a winning points, and they lead for a few minutes. But later on, Naruto overcome them, and now Naruto is on 54. Fearless is on 50. Naruto. So here is a raid to begin. The chant is to begin, and this is from Fearless. There is only one guy from Naruto, and he's trying, but he couldn't hold him, and they lost 1 more point. So Fearless is on now 51, 54. This was a moment when they are equal, and this is a beautiful moment when they equal this match. Incroyable scénario à la mi-temps. Donc Naruto qui menait largement s'est fait rattraper maintenant. Et 54 à partout maintenant. 57 à 53, ce qu'on m'indique pour Naruto. Et je crois, là c'est quelques points de marqués également pour Fearless. « 57 à 54 pour Naruto à l'attaque Fearless. S'il s'en sort, ce sera un exploit. S'il marque des points, égalise
Exploit encore une fois. Va-t-il s'en sortir? Seul contre 6 adversaires. Allez, on verra bien. Voilà, je crois que le point sera accordé. Voilà, c'est accordé donc à Fearless. So Fearless is on right now 54, Naruto on 57. Very interesting match going on. There is some consultation about some points between the umpire and the referees. There is some discussion going on between umpire and referee and their guiding scorer for the scores. They are pointing towards scoreboard, I think. So the score right now, what is on the board is 57-54, but now after the intervention of umpire and referee, it has changed to 57 to Fearless and 54 to Naruto. That means they have taken the lead. There was some mistake. 57 they have given to Fearless. 57 they have given to Fearless and 54 to Naruto. We'll be correcting our scoreboard soon. There is a lot of confusion and discussion going on between the umpires and the referees, and finally the score has been fixed as 59 and 55. Alors l'incroyable donc se produit actuellement avec Fearless qui prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre avec 59 points contre Naruto 55. Fearless qui était mené il y a quelques instants d'une quinzaine de points prend l'avantage maintenant à quelques secondes de la fin. 4 points d'avance pour Fearless. Peut-être une finale pour Fearless contre Black Catalyst tout à l'heure. Mais avec cette rencontre, tout est permis. Tout peut arriver comme je vous l'avais dit au départ. Vu l'intensité de ce match, vu l'envie de ces jeunes joueurs, on voit mal cette rencontre se terminer sur ce score de 59 à 54. À 55 plutôt. मॉरिशस में कबड्डी अभी अपने शैशव काल में है और इसलिए और जबकि यहाँ पर इस तरीके की प्रतियोगिताएं नहीं के बराबर है, इसलिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी थी जिसे सुधार लिया गया है और अब फिर खेल शुरू 59 पर इस समय फेयरलेस लीड कर रहा है जबकि नारुतो 55 पर है। स्कोरिंग में कुछ गड़बड़ी थी जिसका सुधार लिया गया है और अब इस बीच नारुतो का इंतजार और देखना है कि वो टच करने के पहले ब्रीथ अपनी संभाल पाए थे कि नहीं, और इस तरीके से 2 अंक दिए गए हैं। फेयरलेस पहुंच गया है 60 पर और नारुतो है इस समय 55 पर। इस बीच में अगली रेड स्कोर, ऑफिशियल स्कोर और हमारे स्कोर में काफी difference. There is a lot of difference is happening between our score and official score. Let's go with the official score. Official score is saying Fearless is on 57, Naruto is on 59. There is still some discussion going on, but the game is also on. And this time, Fearless is on attack and it's a beautiful tackle by Naruto. Naruto has got a very, very young team, but a very agile, very fast, especially for the defense. They are very good. Now it's a time for Naruto to attack. Naruto has again taken a lead. They have taken a lead, and now there is only one guy trying to stop him. He couldn't, and this is the all-out. Alors donc, score de parité maintenant avec 59 points pour chacune des équipes. Match très serré donc, cette demi-finale très disputée entre ces deux équipes, Naruto et Fearless. À un certain moment donc, c'était net avantage pour Naruto, mais petit à petit, Fearless est revenu et là,
Le score est passé de 64 à 59. Voilà, avec je crois quelques points de marqué maintenant pour Naruto également. Donc un Fearless qui était revenu au niveau, mais qui peut-être maintenant va se faire distancer un tout petit peu. Avec un total de 65 points pour Naruto et 60 pour Fearless. Le Fearless Warriors donc en vert et l'équipe de Naruto qui se trouve en orange. À qui la place en finale de cette première compétition indoor de Kabaddi? Réponse dans quelques instants avec la fin de cette première semi-finale, cette unique semi-finale donc, puisque l'autre finaliste est déjà connu. Ce sera Black Catalyst donc, qui affrontera le vainqueur de cette rencontre. Pour l'instant, c'est Naruto 65 et Fearless 60. So Fearless is on 60 and Naruto was on 65. Again, lead went to in favor of Naruto. There is some injury and the first aid team is attending him. The performance of Naruto is brilliant. They came from behind, from the starting point, then they took lead. Right now they are leading with the 5 points. A very agile, very active, very young team compared to Fearless. And really Fearless students who are trying to increase their lead. Naruto was on 65 and here is a raid from Naruto. The touch line is crossed and now is trying to catch someone and it was a failed attempt. This is a successful raid and with this successful raid now Naruto is on 67, Fearless is on 60. Here is Fearless on attack, quite inside and quite deceptive and a beautiful raid. He finished it nicely. He found place for himself and took 3 players from the Fearless side, and this is a beautiful thing. And with this, the match is ending. And the Naruto is... Alors, victoire finale de Naruto sur le score de 67 à 62. Mais bravo quand même à cette équipe de Fearless qui a cru en son étoile, qui est revenu de très loin pour attaquer et essayer de revenir dans les dernières minutes. Mais évidemment, ils ont passé en tête à quelques minutes de la fin, mais n'ont pas pu tenir le rythme. Et maintenant, c'est Naruto qui se trouve en finale avec 67 points, Fearless 62. La finale donc en Black Catalyst et Naruto dans quelques instants. Le temps pour nous de vous donner les joueurs de Black Catalyst avec Hassan Mouchal, Hassan Nabil, Jassim Kenabakus, Mujahid Nabiokus, Imti Saifullah, Ghulam Kader, Yashnil Ramsoren pour les Black Catalyst et pour Naruto, Andrew Meunier, Félicité Jason, Tedé Kodzi, Saab Ashraf, Yogen Chenembarum, Montalent et Ashfaq Emoli. On se revoit dans quelques instants donc pour la finale de cette première compétition indoor ici même au Sports Complex de Côte d'Or à l'île Maurice. A tout à l'heure donc. Merci.
Avez-vous plein de projets pour une vie meilleure et vous ne savez pas par où commencer? Misez sur votre avenir. Faites confiance à la banque de Baroda. C'est le meilleur partenaire bancaire qui vous aide à grandir dans la vie. Pour chacun de vos besoins financiers, la banque de Baroda a une solution. Prêt pour voiture, pour taxi, prêt logement, plan pour SME, prêt pour l'agriculture, prêt business, ATM à travers l'île, compte d'épargne, mobile banking, internet banking et d'autres produits et services pour vous accompagner sur le chemin du progrès. Un petit pas vers nous, c'est un grand pas pour votre avenir. Bank of Baroda, India's international bank. See, Indian Oil was incorporated as a company in 2001 in Mauritius. In fact, it is the wholly owned subsidiary of Indian Oil Corporation, the largest company in India. In fact, it was driven by the vision of both the governments of India and Mauritius, so that Indian Oil to be here, to be present in Mauritius as an oil marketing company. State-of-art facilities, dedicated team, and quality has been our USPs. Indian Oil has automated terminal, which is one of its kind, which is also ISO certified. In addition to that, we are the only company in Mauritius which provides dedicated pipelines for receiving product from the tankers into its tanks. We have a laboratory, first of its kind, only of its kind in Mauritius. We are capable to supply the refinery grade of products to our customers, to our end users. There is a highly energetic and motivated young team in Indian Oil. In fact, they are highly passionate, well led by a dedicated team of professionals with the domain experts who have come from India. We have also provided a lot of innovations like non-space fuel pump or digital tire inflators. As far as aviation sector is concerned, Indian Oil has become the most preferred supplier of aviation fuel in Mauritius. We are also hugely present in bunker fuel of both fuel oil as well as marine gas oil. We are also significantly present in sectors like transport sector, in hotel sector, and other large industries as well. Indian Oil is supported by Servo brand of world-class lubricants. It has almost 400 formulations marketed in over 330 countries in the world. Indian Oil is completely geared towards meeting the societal objectives. We have been supporting big causes. We have been also focused towards support to places or to actions or to the causes like SOS Village, Global Rainbow Foundation or Club Maurice, as just a few of this. We are the only company in Mauritius which has one of its filling stations which is fully solar powered. So that shows our green initiatives and to make life sustainable in our island nation. Indian Oil has a vision to be in every heart and in every part. We also would like to be the most preferred supplier in this country. At the same time, we also would like to be the partner in growth for the island nation. And I'm sure we shall make it happen. Family means everything to us, and our dearest wish is to see them happy at all times. But how to protect oneself against the unpredictability of life? By choosing an insurance at the LIC, we've got a product to suit each of your needs with more than 300 million customers worldwide and more than 6 decades of experience in Mauritius. The LIC is certified by the Government of India. Choose security, choose life, choose LIC.
At a small interest rate, don't expect your savings to grow fast. Instead, by investing in the insurance and investment plan of the LIC, you can expect 22% money back of the premium paid every 3 years. Our insurance and investment plan starts as low as 50,000 rupees, a guaranteed money back every 3 years. The products of the LIC are guaranteed by the Government of India. With its secured 22% money back, choose security and peace of mind. Choose the LIC. Avez-vous plein de projets pour une vie meilleure et vous ne savez pas par où commencer? Misez sur votre avenir. Faites confiance à la banque de Baroda. C'est le meilleur partenaire bancaire qui vous aide à grandir dans la vie. Pour chacun de vos besoins financiers, la banque de Baroda a une solution. Prêt pour voiture, pour taxi, prêt logement, plan pour SMI, prêt pour l'agriculture, prêt business, ATM à travers l'île, compte d'épargne, mobile banking, internet banking et d'autres produits et services pour vous accompagner sur le chemin du progrès. Un petit pas vers nous, c'est un grand pas pour votre avenir. Bank of Baroda, India's International Bank.
Alors nous voici donc de retour au complexe sportif de Cote d'Or pour cette demi-finale chez les filles qui oppose Hurricane à Memento Mori. Donc pour atteindre la finale, évidemment, il faudra qu'on gagne cette rencontre tout simplement. Et maintenant, pour le moment, c'est Memento qui mène sur le score de 5-2. 6-2 maintenant, on me fait signe. 6-2 déjà pour Memento qui est en orange. Et l'équipe de Hurricane, lui, est avec le maillot vert et bleu. À mes côtés également, Ashutosh Deshmukh pour les commentaires en hindustani et en anglais. So we have been great for the semi-final for the men with victory for Naruto against Fearless Warriors, and one of the biggest moments at the end when Fearless was being led by 15 points. They succeeded in coming back and even they took the lead at some minutes to the final, but they failed to win this match. Rightly said, Mr. Harley. This is what happened. This was a great moment for Memento. Actually, they came from behind and they lead. So that was something very interesting. Now, the next match is between, this name, the name match between the Memento Mori and Hurricane. This is in the girls segment, and right now Hurricane is having 7 points and Memento is on 11. Alors donc, Memento qui mène 11-7 dans cette rencontre. Les demi-finales chez les filles avec maintenant l'attaque de Memento. Voilà, est-ce qu'elle va s'en sortir, l'attaquante? Mais je ne crois pas. Un point additionnel pour Hurricane, 8-11. Voilà, 8-11 pour Memento qui mène. Le score a changé également pour Memento. This is a secondary girls schools match between Memento Mori versus the Hurricane, and the score right now is in the favor of Hurricane. In the favor of Memento. Memento is having a 12, Hurricane is having 9, and the match is on. This is a secondary girls final. The Memento team is alors Hurricane qui était à l'attaque. So here is a red from Memento, already leading on 16, quite deep inside, trying to defend. And finally she was catched there by the defender. A beautiful attempt. The jump over her, and despite of her force, she couldn't return. So one more point to Hurricane. Hurricane now is on 11. Memento still leading with 16. Attack is from Hurricane. This is a red. And she has already touched the line, and she's trying to touch these two guys and both the girls. She has touched one girl, and that means she got 1 point out of this. With this point, now Memento is already on 16 while Hurricane is on 12. Alors 16-12 maintenant pour Memento. Et je vous rappelle que la durée d'une rencontre de Kabaddi, c'est de 20 minutes, 2 mi-temps de 10 minutes, avec une pause à l'intervalle de 2 minutes. À l'attaque, l'équipe de Hurricane. Est-ce qu'elle va se faire dévorer par les Memento?
Attention, elle va s'en sortir peut-être le temps de toucher l'adversaire, essayer de revenir dans sa partie de terrain. Non, elle a pu. Là, voilà. La main donc, la main droite qui a franchi la ligne médiane. Donc elle marque un point pour Hurricane, 15-16. What a raid, brilliant raid. Brilliant raid from Hurricane. And with this raid, Hurricane has equal. In fact, they have crossed the score. Now Hurricane is leading by 20. A wonderful raid which gives them 5 points. Memento is still on 16. One raid which was like very memorable, and now the attack is from Memento side, and she was well received, well covered, and not allowed to move with this. The winners of this match between Hurricane and Memento will play against the Avengers, and that will be the final match. Now here, the raid is from Hurricane. Only one guy, and she easily out her, and with this, the Memento got one more point. Alors donc, Hurricane is on 24 and Memento is on 16. 24-16 pour Hurricane actuellement, qui se faisait mener au tout début de cette rencontre. 24-16 maintenant, 8 points d'écart pour Hurricane. Et la finale opposera donc le vainqueur de cette joute actuelle contre l'équipe de Avengers, qui elle s'est déjà qualifiée pour la finale. Une finale donc qui se disputera peut-être cet après-midi évidemment. Alors, Hurricane 24, Memento 16. 8 points d'écart pour Hurricane. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct du complexe sportif de Côte d'Or à l'île Maurice, où le Kabaddi, nouvelle discipline sportive introduite dans l'île, fait surface ce matin, depuis ce matin donc, avec les équipes juniors chez les filles et chez les garçons, également les équipes des écoles primaires chez les garçons et chez les filles. Actuellement donc nous sommes en demi-finale. Hurricane contre Memento. 24-19 pour Hurricane qui est à l'attaque maintenant en vert. Elle se fait immobiliser donc. Un point pour Memento. 24-20. Et je vous rappelle les règlements du jeu. 7 joueurs ou joueuses par équipe. L'attaque, donc, on doit pénétrer dans le carré adverse, essayer de toucher un adversaire et retourner dans sa surface sans être rattrapé. Une fois rattrapé, donc, le point est alloué à l'équipe adverse. Mais si elle est attrapée et que une partie de son corps se trouve sur la ligne médiane ou dans son corps, même un petit doigt, le point est alloué à l'équipe attaquante. Et 30 secondes donc pour attaquer. Et à placer ces 30 secondes, si l'attaque n'a pas été effectuée, c'est l'équipe adverse qui obtient le point. Comme vous le voyez à l'écran, ça clignote 30, démontrant les 30 secondes. Dès que la joueuse sera dans la partie adverse, le chrono est déclenché, voilà qui est fait. Nous sommes maintenant à 25 secondes. L'attaque donc en 25 secondes maintenant un peu moins. Pour Hurricane qui attaque, elle n'a pas touché l'adversaire, elle se fait immobiliser et le point sera alloué à Memento, 22 points, 23 points maintenant pour Memento contre 27 à Hurricane. So Hurricane lost this important point and Memento is now slowly catching up with Hurricane, although they lost 7 points earlier. Now this is Memento is on 22 and Hurricane is on 27. Now it's a time for raid from Memento. Hurricane have only 2 players live at this point, and let's see how much more Hurricane can score out of this. 27 is the score of Hurricane, and Hurricane team which is playing very well. The team which has got Chelsea, Kimberley, Shannon, Alicia, Ophelia, Marianne and Anil. Wonderful game.
There is a hold for some moment. There was some medical thing. First aid team is there to look after. Mauritius is new to Kabaddi, and the players, they are full with energy, full with enthusiasm, but still they are lacking in tactics and skills sometimes, somewhere, and that amounts to injuries to them because they are playing with force and the swiftness which was required at certain points that was missing. But still, the game is picking up fast in Mauritius, and like it is really encouraging to see that so many school kids are here participating in this inter-school competition which is played on such a big level, and for which like we are bringing you this live commentary from the most famous, the Cote Sports Stadium in the Mauritius. It's a sports complex, wonderful complex. It has got a very good Olympic size swimming pool, gymnasium and everything. Now the game is on hold for some time as some player from Hurricane has been injured, and as there is not much bench strength, because that's a problem when you have a less playing teams, then the number of players are also very limited. So right now they're waiting for the break, and this is like Hurricane on 28 and Momento is on 22. Want to win the game, as we are seeing now, but the advantage with Hurricane 28 to 22 means that they have got something. Yeah, this is something special Yeah. that allow them to lead the game. But as we had witnessed between the men just before, leading all the way doesn't mean that you will win the game. Yes, you're right, because last match also we saw that Naruto, which was like losing in the beginning, but ultimately like they won. So Hurricane has got a good team, but I think I saw one problem in this because they have only one or two players who are like a very decent players who are like scoring maximum, and team is completely dependent on few players, like only two players from Hurricane side. And Momento, from this point, you can see that the complete team is playing as a game, although they are a little bit less on skill. And the two players who are from Hurricane, they are really brilliant players. They are doing extremely good. Well, the game is about to restart now, and it's thrilling. It's a thrilling game, as I see, because both teams wants to go to the final to meet Avengers for the finals for the girl. And just to remind you that for the boys, the final will be between Black Catalyst and Naruto. Alors donc, juste pour vous rappeler que la finale chez les garçons sera entre Black Catalyst et Naruto, et actuellement chez les filles, la semi-finale, Momento Mori contre Hurricane. Momento mène 24-27, et la finale, c'est Hurricane qui mène plutôt 27-24, et la finale sera contre Avengers, contre l'une de ces deux équipes. La partie qui va reprendre dans quelques instants. Alors le temps de retour maintenant, 28 points donc pour Hurricane. Hurricane is on 28. Et Momento 24. Momento has won the point and it's on 27. And now this is an interesting attack from Hurricane. She is the girl whom you have to watch it, because last time she won 4 points in a row. A very swift player, very fast, very attacking, but now she is losing her breath, and definitely it will be difficult for her to return. If she tries more, she has to go back, and this way, this is the attack from Hurricane, and there is no score as such. Now it's a time for Momento to move. Hurricane is on 27, Momento is on 28. They have taken a lead. Alors 28-27 donc pour Momento actuellement. Momento donc qui a comme représentante Panavi Tulsiram, Nabila Mitou,
Mouchaïba Bikari, Amy Perrine, Valérie Jean, Megan Joseph et François Clarignan. Et pour Hurricane, Chelsea Lamporte, Kimberly Trapu, Shannon Baptiste, Alicia Edouard, Ophélie Prosper, Marianne et Anaël Bien-Aimé. Le score qui va peut-être évoluer, voilà, le score évoluera évidemment. Le temps de voir les juges avec 30 points environ. 32 points même pour Momento et 27 pour Hurricane, 5 points d'écart. So Momento is right now on 32, Hurricane on 27. They had a beautiful lead, but they lost it. Now Momento has got the momentum, and now they are on 32. The last raid, they won 4 points, which were very important, and now again the raid is with them. And easily, she finished the remaining 2 points also, and with this, now Momento is moving on 35. 37. Alors 37 à 27, 10 points d'écart maintenant, à quelques minutes de la mi-temps avec l'attaquante de Hurricane, donc qui semble être une parfaite attaquante, puisque je crois qu'elle a marqué encore un point maintenant. Yes. Pas de points marqués. L'attaque maintenant du côté de Momento. Elle va se faire attraper. Non, elle marque un point. Donc 38 à 28 pour Momento finaliste. Alors, donnez tout corps et âme pour cette finale, pour rencontrer l'équipe de Avengers. So Momento is on 39, Hurricane is on 28. Momento इस समय है 39 पर, जबकि हरिकेन है 28 पर, और यह है अंतर विद्यालयीन नेशनल चैंपियनशिप मॉरिशस की, जो कि खेली जा रही है मॉरिशस के कोडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस समय इन दोनों टीमों में से जो विजेता टीम रहेगी लड़कियों के वर्ग में, वो फाइनल मुकाबला खेलेगी। उनका फाइनल मुकाबला होगा एवेंजर्स के साथ। एवेंजर्स की जो टीम है उसमें एमिली, जेड, रुखसर, मरियम, पुवानी, माशेल और शकीना है, और ये मैच भी दिलचस्प होगा।
Avez-vous plein de projets pour une vie meilleure et vous ne savez pas par où commencer? Misez sur votre avenir. Faites confiance à la banque de Baroda. C'est le meilleur partenaire bancaire qui vous aide à grandir dans la vie. Pour chacun de vos besoins financiers, la banque de Baroda a une solution. Prêt pour voiture, pour taxi, prêt logement, plan pour SMI, prêt pour l'agriculture, prêt business, ATM à travers l'île, compte d'épargne, mobile banking, internet banking et d'autres produits et services pour vous accompagner sur le chemin du progrès. Un petit pas vers nous, c'est un grand pas pour votre avenir. Bank of Baroda, India's international bank. Indian Oil was incorporated as a company in 2001 in Mauritius, but it is the fully owned subsidiary of Indian Oil Corporation, the largest company in India. In fact, it was driven by the vision of both the governments of India and Mauritius, so that Indian Oil to be here, to be present in Mauritius as an oil market. State-of-art facilities, dedicated team, and quality has been our USP. Indian Oil has automated terminal, which is one of its kind, which is also ISO certified. In addition to that, we are the only company in Mauritius which provides dedicated pipelines for receiving product from the tankers into its tanks. We have a laboratory, first of its kind, only of its kind in Mauritius. We are capable to supply the refinery grade of products to our customers, to our end users. There is a highly energetic and motivated young team in Indian Oil. In fact, they are highly passionate, well led by a dedicated team of professionals with the domain experts who have come from India. We have also provided a lot of innovations like non-space fuel pump or digital tire inflators. As far as the aviation sector is concerned, Indian Oil has become the most preferred supplier of aviation fuel in Mauritius. We are also hugely present in bunker fuel of both fuel oil as well as marine gas oil. We are also significantly present in sectors like transport sector, in the hotel sector, and other large industries as well. Indian Oil is supported by Servo brand of world-class lubricants. It has almost 400 formulations marketed in over 330 countries in the world. Indian Oil is completely geared towards meeting the societal objectives. We have been supporting big causes. We have been also focused towards downtrodden and underprivileged, to be specific. Our support to places or to actions or to the causes like SOS Village, Global Rainbow Foundation or Club Maurice are just a few of this. We are the only company in Mauritius which has one of its filling stations which is fully solar powered. So that shows our green initiatives and to make life sustainable in our oil production. Indian Oil has a vision to be in every heart and in every part. We also would like to be the most preferred supplier in this country. At the same time, we also would like to be the partner in growth for the island nation. And I'm sure we shall make it. Family means everything to us, and our dearest wish is to see them happy at all times. You're But how recording? to protect oneself against the unpredictability of life? By choosing an insurance at the LIC, we've got a product to suit each of your needs with more than 300 million customers worldwide and more than 6 decades of experience in Mauritius. Alors retour donc au complexe sportif de Côte d'Or pour cette semi-finale du Kabaddi chez les filles avec
Pour l'instant, Momento qui mène 39 à 28. Nous sommes à l'entame de la deuxième période. Et je vous rappelle que l'équipe vainqueur de cette semi-finale affrontera en finale l'équipe Avengers. 11 points d'avance actuellement pour l'équipe de Hurricane en vert et le Momento en orange. So very interesting match between Hurricane and Momento. Momento is leading with 41. Hurricane is on 30. After a brilliant start by Hurricane, again Hurricane is on red. And try to get into more, giving chance for the Momento girls to try for a catch. And it was a very, very poor finish. Very poor finish. When she was losing his breath, she went inside and she had no time to come back or to struggle. Hurricane is now on 31 remain and Momento 43. Read by Momento. Although there are 6 players and a beautiful tackle by these teams, and seems there is some injury. There is a call for first aid. It was a beautiful tackle by the small girls from Hurricane. The complete chain, all in the 3 chain, they come together and they caught her. And in that thing, I think she was pushed a little bit hard, and I think she has some injury, being taken care by a medical team. So this is a very interesting match, and the winner of this match will play with the Avengers in the final. Alors donc l'attaque de Momento qui s'est mal terminée pour son attaquante, qui s'est fait mal en retombant. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir continuer cette rencontre? Les soigneurs sont à côté d'elle, évidemment, pour lui porter les premiers secours. Et le score actuellement, Momento 43 et Hurricane 32. 11 points d'écart pour affronter en finale Avengers. Il faudra évidemment remporter cette rencontre. Une rencontre donc qui dure 2 fois 10 minutes avec une mi-temps espacée sur 2 à 3 minutes. Elle se relève péniblement, cette sociétaire du club de l'équipe de Momento. Le match donc qui reprendra dans quelques petites secondes. L'attaque de Hurricane pour l'instant. Hurricane qui attaque, qui ne va pas s'en sortir. Un point additionnel pour Momento. Elle s'est fait immobiliser, placarder au sol pour utiliser le jargon de rugby. So Momento is on red. They're already leading with 43. A game of power, game of grit, and game of speed. But this time, very good catch by Hurricane girls. This will definitely a good catch. Again, there seems to be some injury. Deuxième blessé chez les Momento. Ça va très mal donc pour Momento, malgré que cette équipe mène au score de la deuxième joueuse qui semble être blessée. Mais on a pu voir évidemment que l'autre a pu regagner sa place
dans le carré. « 44-33, 11 points d'écart. Lot of injuries happening early. What is the reason? Like these players, most of them are like not able to sustain energy for the short period. Maybe playing so many matches in the half of a day. Okay. Okay, I think. That may be a reason. Lot of matches. Because don't forget that we started at 9. Yeah. And we have played about 3 to 4 matches in half a day for each team. So it's a bit exhausting, maybe. Yeah, you're right. And maybe there is a very less match practice as such. Because normally what they do practice. But this type of tournament practice, they rarely have a chance because there are very few tournaments or negligible. What a good raid here by Hurricane. And they got 2 points. And these 2 points will bring them on 35. Good raid. So now Hurricane is also trying to cover up. And there is again a beautiful catch by Hurricane. So now one more point to them. And now their score will be, after this point, must be 36. The finals, the scoreboard has made it 36. And now here is a raid from Momento. 46. And a beautiful raid. Beautiful. Successfully, she took 2 players with her. And these 2 players will give them 2 numbers. So, Hurley, we can see a little that like now Hurricane is reducing the gap. Yes, with these 2 points now they have reached to, I think, 38. Let's wait for the. No, it's like 40 now. 40 to 45, so 40, only 5 points. Yeah. So I think that we will face the same kind of match that the semi-final between the men of Naruto and Fearless Warriors, where Fearless Warriors came back but they lose on the final minutes. Alors donc 45 à 40, est-ce qu'on va retrouver le même type de rencontre que la demi-finale chez les messieurs entre Naruto et Fearless Warriors, où Fearless Warriors est revenu dans le tas pour attaquer, mais malheureusement ils ont échoué sur le finish pour ne pas aller en finale. 41 à 45 actuellement pour Momento, 4 points d'écart. L'attaque de Momento maintenant. Elle s'en sort. Un point additionnel. 46 à 43. « 47 à 43 même, 2 points. Je m'excuse puisque les règlements, je les apprends comme vous maintenant. C'est la première fois que je commente ce genre de rencontre. Donc, « 47 à 43, 4 points d'écart pour l'instant. » So Momento is getting back control. Now they are leading with 48 their point against 43 of Hurricane. Let's see now whether Hurricane can stop this Momento. This is very difficult and they lost huge points. They lost 4 points. They lost 3 points. They had to check with the line and they lost all the points. All the 4 points they lost. So this is like all out. And now the score is completely in the favor of Momento. Now Momento score has reached after this all out is, now they are on 54. So 54 is now their score against the 53 of Hurricane. Now it is very difficult for Hurricane to come back in the game, it seems. Although it all depends on this raid
if she can do it successfully like what she did last time. And this is what she got 2 points here. What Momento is trying to push the Hurricane Raider outside this, and both the times they were unsuccessful. So now Hurricane was 43 and the Momento is on 54. And what a successful raid this time. And they lost almost 4 points. Yeah. So the score is completely in favor of Momento. And Momento is leading with confidence, leading with the huge score. Currently they are on 58 and Hurricane is on 46. This is a raid from Hurricane. Let's see what they can do. Not able to touch anyone till now, and now it is very dangerously. She's getting into very dangerous zone, and successful raid. She got only 1 point, and this 1 point will take the score of Hurricane to 47. Now it's a Momento stand. With the speed, we try to tackle it, but completely failed. And they lost 2 points in this. The 2 points, 2 important points. And now slowly, they are losing the control. And the Momento is getting momentum and going fast and ahead. So इस समय इन दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला था हरिकेन और मोमेंटो के बीच, वो एक समय तक बहुत ही साथ साथ चल रहे थे, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक थे. लेकिन इस समय मोमेंटो ने नज़दीकी कम कर दी, दूरियां बढ़ा ली है. मोमेंटो इस समय है 61 पर, जबकि हरिकेन है 48 पॉइंट पर. और इस बीच एक बार फिर से कोई इंजरी, और इसके लिए वहाँ पर फिर से फर्स्ट एड की टीम को बुलाया जा रहा है. फर्स्ट एड को बुलाया जा रहा है और देखना है कि हरिकेन इस समय स्कोर को कहां तक ले जा सकते हैं. So early match is slowly moving into tight grip of Momento. Right now they are on 64 and Hurricane, who were really played some very good kabaddi, but now losing. Momento 64, Hurricane 48. I think that Momento will go on winning, because as soon as Hurricane scores 1, Momento scores 2 or 3. Have you noticed that? So, basing on what is happening now, I think Momento will go into the final against Avengers. Alors mes amis, donc avec 64 points maintenant et 48 pour Hurricane, les choses commencent à se décanter donc au niveau de cette semi-finale, avec Momento qui se dirige vers la finale contre Avengers. Il ne reste pas grand-chose comme temps pour cette rencontre. Est-ce que Hurricane pourra faire le coup de Fearless Warriors chez les garçons? On ne sait jamais, mais avec le statut de cette équipe de Momento que je vois vraiment à l'attaque très forte, peut-être que la finale sera entre Avengers et Momento. Injury is one part which is like happening a lot today. It may be because of continuous kabaddi they are playing, and second also they have less practice of competitive kabaddi. Mauritius is a small country and the number of players who are regularly playing kabaddi in different age groups are also limited, although this number is increasing quite a lot. Harley, you are like a very senior commentator from Mauritius. You have seen all the games. How do you see this game? Like, I know you, this is the first chance for you also to do this commentary for Kabaddi, but how do you see this game? And are you surprised the way the so many of people are coming? When I was first called to comment on this game, I told to myself, but how can I comment on something that
don't even know it existed. You see? So I just go on the website of Indian Kabaddi and try to understand how it works. But to be frank, to be honest, I don't understand. I haven't understand how it works. But when coming here, I just try to see how it is working, and then it's very interesting. And I think that if it is introduced in Mauritius, it will help for a greater number of people playing this. So this is like a very interesting thing, because. But are you sure the way the Mauritius the game is being played here, the game being played here? I mean, now the way it is picking up, are you impressed with this? Of course, because it's like a physical game, a tactical and physical game. You must know when to attack, when to retrieve back, and when to say yes or no for attacking. You see, so very interesting, and tactically it's like the chess. Playing chess is like just playing chess. Yeah. Why I am impressed is, I mean, the number of so much of people, like number of so much of yes, girls I'm and boys, amazed. and the way they are taking interest, and that is very interesting. I'm amazed to see the number of people attending the game, because just to be frank, in a football match, the first division, we got 50 to 60 per person only, and here we have over 100. You see? That is very interesting. Yeah. That's very interesting, and now the game is about to start, and game has already started. The score is in the favor of Hurricane. Now score is in favor of Momento, who was playing with the 65. Hurricane is on 48, and now the raid is from Hurricane. Hurricane tried to come back into this match, but which is very difficult but successful raid. We could get 1 point out of this. With this 1 point, Hurricane should be on 49, and the Momento has scored 65 points. Now, this is the time for raid from Momento. He's got into, and then he's trying to tackle her, but this is a very interesting position when the Momento is on 70 and 51 is. Alors 51 points, 70 pour Momento, 51 pour Hurricane. À quelques minutes de la fin, avec une attaque de Hurricane. Et le point sera alloué à Momento, je pense. C'est exact, donc le point sera alloué. « 72 même maintenant pour Momento contre Hurricane, 52 à 71, voilà. Voilà, 52 Hurricane, 71 Momento, 19 points d'écart. Momento qui file allègrement vers la finale de cette compétition chez les filles. Et je vous rappelle, la finale chez les garçons mettra aux prises Black Catalyst à Naruto, juste après cette rencontre. 71 is now a big score for Momento, and Hurricane is on 52. Very difficult to cover up, I think, now. With the first half is already over, now we are into second half. The team seems to be tired, but now everything depends on this raid. If this is a successful and it pass on momentum from Momento to Hurricane, then it will be interesting. It's a typical raid from right side and moving towards right, from the left to right, and trying to catch and basically inviting them to catch her. She's very swift, she's very fast, and she's very agile. No one tried to catch her, but she got 1 point. It is to be seen whether the point is given or not. The umpires are asking her, and she's back there. That means the point is not awarded to her. So Hurricane is right now on 52 and Momento is on 77. Now this is interesting. They are very good in catching Hurricane. They caught her, and 1 point with this. So Momento on
77 and Hurricane on 52. Now here is a red from Hurricane, moving towards, crossing all lines and a beautiful lane. I think she got 2 points out of this. She must have got 2 or 1. Let's see for the signal from umpire. And with this, they have to see whether they give point or not. This is a stepping out by the player. And the umpire decided it was a fault from her as she stepped out without touching when she was not in body contact with any of the player, and it cost her 1 point. And Momento is now on 78. On 78. So, alors, donc un match qui tire à sa fin avec net avantage maintenant pour Momento, 78 à 53. 25 points d'écart qui sera difficilement rattrapé par Hurricane, à moins, comme chez les garçons, d'une remontée spectaculaire qu'avait réalisé Fearless Warriors, mais pour échouer à quelques minutes de la fin. Alors 78-53, les Oranges qui mènent toujours dans cette compétition, dans cette semi-finale. Et l'écart même qui se creuse maintenant avec 79 à 53. Très difficile pour l'équipe de Momento, très pour Hurricane plutôt de revenir. Malgré cette attaque de Hurricane, peut-être à marquer un point. Voilà, un point donc pour Hurricane. L'attaque de Momento maintenant. 55 à 79. « 56 à 79 maintenant. Toujours l'avantage de Momento. Hurricane à l'attaque. Elle va pas s'en sortir, mais si. Elle marque encore 2 points pour passer à 58. Attaque de Momento. 1 contre 7. Elle va pas s'en sortir. 1 point additionnel pour Hurricane. Et 20 points d'égalage. 20 points d'avance pour Momento. « 59 à 79. Voilà le match donc qui prend fin avec la victoire de Momento, 79. Hurricane, 60. So this is the interesting semi-final match between Hurricane and Momento, and the winner of this will play the final with the Avengers. Score right now is Momento is on 79, where Hurricane is on 62, and we have a time as the break has sought to talk with Mr. Deepak Jain. Mr. Deepak Jain is a Vice President Finance in Indian Oil, and one of the sponsors, one of the company which is really helping to promote Kabaddi in Mauritius. How did you find this, the complete environment and the Kabaddi and all? Sir, as a Indian Oil, it is our policy to the sponsorship of such event, or whenever Mr. Harith has contacted us to sponsor this event, so we are thinking it is not possible in the Mauritius, but by seeing the magnitude and the arrangement, we can say the
arrangement to the level of international level, and we will congratulate entire team to organize such beautiful event. दीपक जी, आपने जो बात बताया, एक तरीके से हम लोग भारत में भी कबड्डी का नाम सुनते रहे, बचपन से खेलते भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कबड्डी अभी हो रही है, स्पेशली यहाँ पर मॉरिशस में, जबकि यहाँ पर एक कम आबादी के कारण हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर खेलने वाले बच्चे भी कम हैं, उसके बाद ये सब माहौल आपको कैसा लग रहा है? इससे हम लोगों को लगता है कि हम जब अपने बचपन की याद आ गई है। जब हम बचपन में खेलते थे तो मिट्टी के ग्राउंड में खेलते थे और उस समय इतना डेवलप नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो लगता है कि बच्चों के अंदर एंथुजियम देख के और जो फैसिलिटी देख के हमको लगता है कि हमें दोबारा से कबड्डी स्टार्ट करनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल सही, मुझे भी यही लग रहा है सुबह से जब से मैं बच्चों के साथ हूँ, और ये इसलिए भी अचंभित करने वाला है कि यहाँ पर फुटबॉल के बड़े बड़े मुकाबलों में भी 60, 70, 80 से ज़्यादा लोग नहीं होते, और यहाँ पर इतने सारे बच्चे उपस्थित हैं, और न केवल उपस्थित है, वो इसका मज़ा भी ले रहे हैं। इंडियन ऑयल मॉरिशस में और क्या क्या गतिविधियाँ करता है? मतलब आप तो ऑयल के तो आप यहाँ पे किंग हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या काम करता है इंडियन ऑयल? हम लोग जो वेलफेयर है उससे मेजर्स में हम काफ़ी लोग आगे रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी जब इन्होंने कोविड रिलीफ फंड डिक्लेयर कर था गवर्नमेंट ने, तो इंडियन ऑयल वाज द फर्स्ट ऑयल कंपनी विच वी हैव कंट्रीब्यूटेड 1 million MUR to that COVID relief fund. Apart from that, orphanage and for the cancer institute, we are doing lot of things. Once we have organized the cleaning camp where we have given the motto of the plastic free Mauritius. Oh, that's great. और मैं ये भी देख रहा हूँ कि दिनों दिन इंडियन ऑयल के आउटलेट्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मैं अभी एक देखा मोटोवे पे एक नया आउटलेट आपका आया है, तो और क्या प्लान है इंडियन ऑयल? अभी हम लोगों के यहाँ पे पिछले 3 साल में हम लोगों ने 8 रिटेल आउटलेट खोले हैं। पहले हमारे 19 थे, अभी 27 हो गए हैं। इन द कमिंग ईयर यू विल सी कि मोर एंड मोर रिटेल आउटलेट विल बी ओपन, और इन आवर बिजनेस इज ग्रोइंग। वी आर द 5th largest company of the Mauritius. We are here for the development of country and as well as the society also. That's a great. And that's for the reason, like Indian Oil is one of the reputed company in Mauritius. And apart from this, दीपक जी, मैं आपसे बहुत व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर जानना चाहूँगा, आपको मॉरिशस कैसा लगता है? मॉरिशस, हम जब लोग यहाँ पे आए थे तो हमें लगा था कि पता नहीं क्या एनवायरनमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे आके फ्रॉम द डे 1 ऐसा ही लगा कि इट इज ए होम अवे। So it is a part of India. Whatever the culture, feeling, everywhere you are going, you have been recognized, and every second person is speaking so fluent Hindi. So we even do not differentiate whether we are in foreign country or we are in our own country. But here the discipline, traffic management, environment are fantastic. That we are not even thing in India. I am earlier living in the Delhi or Mumbai, where the pollution and the traffic management is not that much. Here all the persons are following the traffic law suo moto. That is the thing to be learned. And the best thing which I like in Mauritius is that, like, Saturday is Saturday here, holiday, Sunday is holiday, where in India it is difficult for us. In India there is no Saturday, Sunday. Even normal day we are used to work up to 12 o'clock. There is no limit of work. In India we are used to work on Sunday as well as Saturday as per the requirement. But here, if anybody is working 9 to 5, so it is very difficult to get him after 5 o'clock. But that is also very good thing. Having a life and work balance should be appreciated. So thank you, Mr. Jain. We sincerely appreciate Indian Oil's all efforts here, especially the way you are helping for the Mauritian sports, and especially thank you very much for promoting Kabaddi in Mauritius. We have also provided And we hope you personally and Indian Oil as such all the best for the coming year. Thank you very much.
Thank you, As far sir. as aviation sector is concerned, Indian Oil So has this become is what most the preferred thing is. supplier This is the of Kabaddi aviation Championship, fuel. inter-school We are also National weekly Kabaddi present Championship in, going pump of on, fuel of and both, as there is a fuel break oil between as two well as matches, we marine have time gas oil. to speak to some We are of also our guests. significantly present और अब in sectors मैं like जिनसे बात transport करने जा रहा हूँ, आप in motor मिसेस sector पाहुजा हैं, and other आप large भारतीय कॉन्सुलेट में हैं और सेकंड सेक्रेटरी है, और भारतीय कॉन्सुलेट में कला, संस्कृति और विशेषकर भाषा, ये सब के लिए वो काफ़ी कार्य करती रही है। हालांकि नहीं है मॉरिशस में, लेकिन उनकी गतिविधियों को देख के लगता नहीं है कि वो नहीं है। तो स्वागत स्मृति पाहुजा जी, आपको कैसा लग रहा है ये कबड्डी? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है अपने ही देश में हूँ। और 2020 में कोरोना ने जो सारी ज़िंदगी को रोक दिया था, तो ऐसा लग रहा है कि 2021 एक नए जोश, नए उत्साह के साथ शुरू हुआ है। और बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर बच्चियां भी खेल रही हैं, तो हमेशा की तरह ऐसा लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण का एक और संकेत है। और कबड्डी तो बहुत अच्छा खेल है, भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो और अभी तक भारत ने जितने वर्ल्ड कप खेले सब में गोल्ड मेडल जीता है उसने, ये भी एक बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। और महिलाओं की भी जो टीम थी, उन्होंने भी जितने अभी तक मैचेस खेले सब में वो विजेता रहे हैं। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं आज के मैच में भी। और जैसा कि बाकी खेलों के लिए भी होता है, कबड्डी भी हमारे मतलब फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सभी एस्पेक्ट्स को बहुत इम्प्रूव करता है। तो खेलों के लिए बाकी चीज़ों की तरह खेलों का भी अपना महत्व है, और मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। सभी देश जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मिस पाहुजा जी। लेकिन चलिए कबड्डी से हटकर भी कुछ बात करते हैं, और आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव मॉरिशस में कैसा रहा? आने के बाद आपको कैसा प्रतीत हुआ, खासकर यहाँ पर जो हिंदी भाषा है, या आपको कुल मिलाकर जो आपका पहला इम्प्रेशन मॉरिशस का क्या था, और इस समय आप आगे के लिए मॉरिशस में क्या प्लान कर रही हैं आने वाले दिनों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद ईश्वर का भी करूंगी कि उनकी कृपा से मेरा यहाँ आना हो पाया और आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए भी आपकी आभारी हूँ। मॉरिशस सभी जानते हैं बहुत ही खूबसूरत देश है, प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ही मतलब आनंद आ जाता है। सब ऐसा लगता है कि सुंदर है, देखा तो ऐसा लगता है 3 साल तक तो रोज़ देखना है, फिर भी दिल नहीं भरता। और मेरा घर भी बहुत ही सुंदर जगह पर है, जहाँ मैं सुबह सुबह उठ के बालकनी से 5 बजे भी उठती हूँ तो इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। मतलब यूँ माने कि 5 बजे उठकर मैं सुबह सुबह चांद को देख लेती हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे अंधेरा छटने लगता है, बहुत ही सुंदर बादल, पहाड़ मेरे यहाँ से दिखाई देते हैं। शाम को कभी मौका मिलता है घर होने का, तो शाम को जो सूरज ढलने का दृश्य है, मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ, रोज़ फोटोग्राफ्स लेती हूँ। बहुत ही सुंदर देश है, जैसा कि कहा भी जाता है कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया, फिर उसकी नकल करके ईश्वर ने सोचा कि स्वर्ग बनाया जाए। तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। और जहाँ तक यहाँ आकर जो एक कंफर्ट लेवल की बात है, मतलब इतना अपनापन मिला लोगों से। देश तो सुंदर है ही, लोग भी बहुत ही ज़्यादा अपनापन लिए हुए बहुत ही गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आपको घर में होने का एहसास दिलाती है, आपको लगता ही नहीं कि आप भारत से दूर हैं। इतने मंदिर हैं यहाँ पर, पूजा पाठ होते हैं, सभी त्यौहार भी भारत की तरह मनाए जाते हैं। मेरे आते ही, जैसे मैं 11 नवंबर को क्वारंटीन पूरा करके यहाँ आई, तो 13 तारीख की दिवाली थी। इतना खूबसूरत लगा मुझे, सारे मंदिरों में जाकर इतनी शांति मिली। और जैसे 1 जनवरी भी था, तो 1 जनवरी को भी हम अपने घर के पास के मंदिर में गए, और हर जगह हिंदी बोली जाती है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है इस देश की कि इतने सालों में भी जो भारत से पूर्वज आए यहाँ पर विभिन्न राज्यों से, उन्होंने अपनी भाषा को इतना सुरक्षित और संरक्षित करके रखा है कि बहुत ही आसानी से, बहुत सहजता से हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि मॉरिशस के रेडियो और मॉरिशस के टेलीविज़न में मॉरिशस के समाचार हिंदी में आते हैं। बहुत ही मन को बहुत सुकून और बहुत आनंद मिलता है, बिल्कुल जैसे अपने घर में है ऐसा ही। और ना ही किसी लोगों से मिलकर
मैं एक रेडियो स्टेशन पर भी गई तो वहाँ मुझे लग रहा था कि पहली बार सबसे मिलेंगे, लेकिन जैसे उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश करके हिंदी में बात करनी शुरू की कि मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, लेकिन उनकी हिंदी सुनकर ही और उनके अपनेपन से बहुत ही सहजता आ गई और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से हो पाया। तो मैं एक बार फिर से मॉरिशस वासियों का और इस कार्यक्रम के आयोजकों का भी और अविनाश जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आप सबसे बात करने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय जबकि थोड़ा समय है हमारे पास और मैच की अगली शुरुआत होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कैसा लगा। बिल्कुल आपके एक्सटेम्पर। थैंक यू, थैंक यू। Avez-vous plein de projets pour une vie meilleure et vous ne savez pas par où commencer? Misez sur votre avenir. Faites confiance à la banque de Baroda. C'est le meilleur partenaire bancaire qui vous aide à grandir dans la vie. Pour chacun de vos besoins financiers, la banque de Baroda a une solution. Prêt pour voiture, pour taxi, prêt logement, plan pour SME, prêt pour l'agriculture, prêt business, ATM à travers l'île, compte d'épargne, mobile banking, internet banking et d'autres produits et services pour vous accompagner sur le chemin du progrès. Un petit pas vers nous, c'est un grand pas pour votre avenir. Bank of Baroda, India's international bank. Indian Oil was incorporated as a company in 2001 in Mauritius, but it is the fully owned subsidiary of Indian Oil Corporation, the largest company in India. In fact, it was driven by the vision of both the governments of India and Mauritius, so that Indian Oil to be here, to be present in Mauritius as an oil market. State-of-art facilities, dedicated team, and quality has been our USP. Indian Oil has automated terminal, which is one of its kind, which is also ISO certified. In addition to that, we are the only company in Mauritius which provides dedicated pipelines for receiving products from Black Catalyst the tankers versus to base tanks. Naruto. We have a laboratory, first of its kind, only of its kind in Mauritius. We are capable to supply the refinery grade of products to our customers, to our end R, users. but NARU. There is a highly creative and motivated young team in Indian Oil. A passion well led by a dedicated team of professionals with a domain experts who have come from India. We have also provided a lot of innovations like non-space fuel pump or digital tire inflators. As far as the aviation sector is concerned, Indian Oil has become the most preferred supplier of aviation fuel. We are also hugely present in bunch of fuel of both fuel oil as well as marine gas oil. We are also significantly present in sectors like transport sector, in the hotel sector and other large industries as well. Indian Oil is supported by Servo brand of world-class lubricants. It has almost 400 formulations marketed in over 330 countries in the world. Indian Oil is completely geared towards meeting the societal needs. We have been supporting big causes. We have been also focused towards
downtrodden and underprivileged to be specific. Our support to places or to actions or the causes like SOS Village, Global Hindu Foundation or Club Now are just a few of them. We are the only company in Mauritius which has one of its filling stations which is fully solar powered. So that shows our green initiatives and to make life sustainable. Indian Oil has a vision. It's a final. It's a final. We also would like to be the most preferred supplier in this country. At the same time, we also would like to be the partner in growth for the island. And I'm sure we shall do that. Family means everything to us, and our dearest wish is to see them happy at all times. I think we But can- how to protect oneself I think we against can the on- unpredictability of life. By choosing an insurance at the LIC, we've got a product to suit each of your needs with more than 300 million customers worldwide and more than 6 decades of experience in Mauritius. The LIC is certified by the Government of India. Choose security. Choose life. Choose LIC. At a small interest rate, don't expect your savings to grow fast. Instead, by investing in insurance and investment plan from NIC, you can expect 22% money back of the premium paid every 3 years. Our insurance and investment plan starts as low as 50,000 rupees. Guaranteed money back every 3 years. The product is Secure 22% money back, choose security and peace of mind. Choose the LIC. Yes, sir. हाँ, मैं जानता हूँ.
welcome back to Mauritius Sports Complex, Cote Sports Complex. Now here we are ready for the final match of boys category, secondary boys. The match will be between Naruto and the Black Catalyst. Lineup is going on, and by the time when the match starts, we have a time. We have a guest with us. Let's meet Mr. Diwakar Singh, who is the Vice President of Bank of Baroda, who is in charge of Bank of Baroda in Mauritius and African countries. Welcome, Mr. Diwakar Singh. How did you like this event? I mean, Kabaddi out of India. Thank you, Desmukh Sahab. Thank you. It's really nice to see the rural game of India, I will say, which has now flourished in the cities also with so many leagues coming up and so many celebrities owning those leagues. And now all the way in Mauritius, same kind of enthusiasm. It's really marvelous. Nice to see here. And we are really thankful to Bank of Baroda for promoting, for helping this event, because this is how the Kabaddi can be spread here. दिवाकर जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने भी बचपन में कबड्डी खेली होगी, कबड्डी भी देखते देखते अपना रूप बदल रही है, ये नया रूप आपको कैसा लग रहा है? भाई, हमने जो कबड्डी खेली वो अपने गांव में और मिट्टी में खेली, ये कबड्डी मैट पे खेली जा रही है, ये इसका इंटरनेशनल रूप है। और ऐसे भी अगर चीज़ को रेलिवेंट रहना है तो समय के साथ बदलना पड़ता है, तो हमें खुशी है कि कबड्डी भी बदल रहा है समय के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा मॉरिशस में एक मजबूत पहचान के साथ है, आपका अच्छा नेटवर्क है, तो आपके यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एक्टिविटीज़ हैं, आप बैंकिंग में तो मास्टर है ही, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और क्या क्या चीज़ों को प्रोत्साहित करती है? बैंकिंग के अलावा जो भी CSR के तहत जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, फ्रॉम आवर लेवल वी ट्राई टू पार्टिसिपेट इन ईच, ताकि it helps in promoting those activities. At the same time, it gives us also some visibility, which is very important. Yeah, and it's a very competitive environment in Mauritius as far as financial sector is concerned. But Bank of Baroda has proved its place, and it is one of the respected bank in Mauritius. Mr. Diwakar Singh, we also want to know, just want to understand, what is your impression about the Mauritius? This is your first year in the Mauritius, and how did you find this country, the people around? See, Mauritius, no doubt, it's a beautiful country. It is said that God first created Mauritius, then created heaven, copied Mauritius, and then created heaven. So it's an island full of beauty. Wherever road drive is, especially the visuals that you see when you drive on road, the greenery, lush green all around, mountains here and there. Then on somewhere when you are on a height, from there you can see the sea. So all that creates a magnificent view. And how are the people of Mauritius? People are very, very friendly. Yeah. I mean, I have visited other parts of Africa also. Here people are friendly, and they want to help. And one thing I have noticed about Mauritius, that when it is work, other than work on weekends, they live their life. Yeah, so that is good about Mauritius. And let's come back to match. This is between the Naruto and Black Catalyst. It's a final match, and the match has just started. And the first raid was by the Catalyst. Now it's a chance of Catalyst, but he couldn't reach. And the score at this point is 2-2. Voilà, donc nous sommes en finale déjà de cette compétition de Kabaddi pour 2021, ici même au complexe sportif de Côte d'Or à l'île Maurice, avec la finale qui met aux prises Naruto à Black Catalyst. Actuellement le score est de 2-2 avec l'équipe de Naruto plutôt, qui se trouve en vert, et évidemment le Black Catalyst avec le maillot orange. L'attaque dans quelques instants pour l'équipe de Black Catalyst. Black Catalyst donc en finale contre Naruto à 1 contre 1 maintenant, avec Naruto qui attaque et Black Catalyst
Black Catalyst qui va peut-être manquer un point. La décision du juge est attendue. Finalement, c'est Black Catalyst vraiment qui manque un point. 3-2 maintenant. 4-2 même pour Black Catalyst. सो इस समय आक्रमण पर है, जबकि 7 अंक के साथ कैटलिस्ट इस समय आगे है। एक बार फिर से avec, je pense, 2 points additionnels pour le Black Catalyst qui passe à 9 points maintenant. À 8 points plutôt. 1 point donc additionnel pour Black Catalyst. Huit Black Catalyst et 7 pour Naruto. Changement de score encore une fois maintenant. Avec 10 points maintenant pour Black Catalyst. Kabaddi,